Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Now as you can see from the topic of this video, today's topic is all about AIPGT. Now from the scratch, I am going to tell you all about this post graduation entrance test जो कि जो होम्योपैथी का काउंसिल है वो करवाता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, क्या होता है चलिए इसके बारे में समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द एग्जाम, नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट ये एआईपीजीटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है एंड एक पेपर ही कंडक्ट करवाया जाता है दैट हैपेंस एनुअली वंस इन अ ईयर समवेयर अराउंड मई टू अगस्त। कोविड की वजह से थोड़ी शेड्यूल में चेंजेस भी आ गए हैं। इसमें नंबर ऑफ सेक्शंस नहीं होते हैं, टोटल पेपर जो होता है वो 120 क्वेश्चंस होते हैं विदाउट एनी पार्टीशन। जैसे नीट के पेपर में होता था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वैसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर मल्टीपल चॉइस होता है एंड असर्शन रीजन टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, बट दे आर आल्सो ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होता है, दैट इज 1 hour and 30 minutes, and it is taking place or it takes place in English language. Now moving on, talking about the marking scheme. तो अगर you get a question right, for that you are awarded 4 marks and 1 marks is reduced for every negative or every wrong answer. Questions that you do not answer gives you 0 marks. Moving on, this is a very important part, that is the syllabus. ये सिलेबस है एआईपीजीटी का फॉर होम्योपैथिक स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दीज आर द सिलेबस और दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू कवर। सो अगर हम बात करें तो बेसिकली ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स which are related to BHMS course, all of them are included here, starting from anatomy, physiology, organon, pharmacy, homeopathic Materiamedica, pathology, microbiology, forensic medicine and toxicology, practice of medicine, surgery, obstetrics and gynecology, and finally community medicine. Now, the 4 subjects of homeopathy are of utmost importance, that is pharmacy, repertory. Repertory has not been mentioned here, but repertory bhi hai, I forgot to mention it here. And repertory, pharmacy, homeopathic Materiamedica and organon. All of these 4 subjects are of utmost importance when you are preparing for your AIPGT entrance. Talking about the allied subjects, उसमें सबसे ज़्यादा जो contribution होता है वो practice of medicine का होता है, और you can also see that ये practice of medicine is a combination basically, क्योंकि आपको उसे समझने के लिए you need to know the pathology, you need to know the physiology, and that is how you understand what's happening in practice of medicine. So basically the 3 P's, that is physiology, pathology and practice of medicine, are of utmost importance when you are studying for AIPGT. ठीक है, so friends, this was a very basic layman लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एआईपीजीटी का जो एंट्रेंस है उसमें सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन होता है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग विद यू few of the important books and few of the important coaching that you can refer for the preparation of AIPGT. So if you do not want to miss the upcoming updates, please subscribe to Inside Organon and hit the bell icon so that you do not miss the upcoming updates. Also, आपका इससे related कोई भी doubt हो तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हो, and if you want to see the upcoming videos on either coaching centers for और कोचिंग्स, ऑनलाइन कोचिंग्स फॉर एआईपीजीटी, तो आप कोचिंग कमेंट करोगे, एंड इफ यू नीड टू नो द बुक्स जो आप रेफर कर सकते हो देन कमेंट डाउन बुक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।